circuits, what are integrated circuits, and how they developed in course of time, and how it affects our life. These are the three major questions by which we started studying integrated circuit. So my plan for taking this topic is like first we will try to understand what an integrated circuit and what does the integration means here, and what is need for that, what are the advantages and disadvantages, and how much integration is possible. Is there is a limit for it? It's like yesterday when we started, we said in a small chip there are thousands to millions of transistors and other elements to make the circuits. So, is there a limit? Means how many transistors can be made on a very small chip? These numbers have any limit, and if it is, then how do we say that now it is saturated, or in future more integration will come up? So, technologies is there is need to have compact devices with better efficiency. So there are many intelligent circuits comes in, and our device becomes better. So always we need more compact device and more efficient. So this is our need. This is the driving force for these kind of developments in technology, and it's basically a technology thing to develop such a system to form integrated circuits, and then so this is one part, and the major part is another part is how do we make it. So the fabrication of integrated circuits that we will discuss. We will discuss some major methods, and what are the important things to keep in mind when we are fabricating an integrated circuit. So this is the plan to cover this. So we have okay. So with that small introduction about planning for lecture, we come to this slide where we discussed what is the need for microelectronics. We know electronics, what is microelectronics, and what is the need for them. So yesterday also I tried to explain that discrete circuits. Means one is integrated circuit, and opposite to that is discrete circuit. Discrete circuit means all the components you take separately and make bad connection to complete the circuit. So that is called discrete circuit. And integrated circuits are those where opposite is there. Means we don't have to take different components and wire it. We do it in a package. So because of discrete circuits had some problem. What was the problem? One is that it takes a lot of space. Other is that it takes a call on reliability, because there are many connections. So the connections will have an effect on reliability of circuit. Means if there is a circuit which is used as an amplifier, so for an amplification we need a faithful amplification. Means the signal what we are giving in, we want its bigger version, but we don't want to distort it. We don't want like if you have a loudspeaker and somebody is speaking. So faithful amplification should be like that. We can hear that voice loud, but we should be able to identify it. There are some characteristics of there is a characteristic of a voice. Just an example. So the characteristic should not be changed. So that is the reason we need a reliability. Means
trying to means I'm trying to make you understand what do you mean by reliability. If the circuit is not reliable, what kind of problems it can create? It can add a noise to your signal. It can distort your signal. So that is the problem. So we needed a solution for that. So that problem is the cause for the development of microelectronics. So I have told it yesterday as well, but I'm repeating it. It is joining in now. Then what are indicator circuits? It's basically basically we are trying to define it. What do we mean by integrated circuits? So we know discrete circuit. We are very familiar with that because we lab and many times we make circuits. So we know discrete circuit. Integrated circuits also we have used it many times, but we are studying it here. So it is basically a small chip that can function as with different roles. It can be an amplifier, it can be an oscillator, it can be a timer, it can be a microprocessor, or it can be a computer memory. A lot of things. But it is a single chip. So these chips are named in a particular fashion so that by the number, by the name, some numbers are assigned, so by that numbers you can, those people who know how to use it and are part of industry, they can tell what does it mean. These every pin, you see there are a lot of pins are coming out. So these pins are labeled with some numbers, and from that you know which pin is what role it plays. कहाँ पे हमको इनपुट मिल रहा है, किसमें हमको आउटपुट मिल रहा है, कहाँ से जो different output है, we take it from pins, we give input from pins. So that is kind of situation. These are extremely small electronics can perform calculation, store data using either digital or analog technology. There is one technology digital, one is analog. Digital means when we are talking about binary numbers, to 0, 1, up, down, ऐसे करके scale होता है. We will go into more detail because we are learning digital electronics. That part will come later with greater details. So, with that introduction to integrated circuit, we are moving to. We were on this slide yesterday when we couldn't move further. The advantages and disadvantages of integrated circuit. So, what are benefit? What are problems with integrated circuit? This is the next thing. What we have done up to now, we define integrated circuits, and we define what was needed, why it led to the development of microelectronics or technology to develop integrated circuits and all. So first in this slide we are talking about what are advantages after we could make an integrated circuit, how life becomes simple, how things become better. So because of lesser number of connections, reliability of circuit is increased. So this is one thing, we have already discussed that part. And this is extremely small size. Second thing is extremely small size due to the fabrication of various circuit elements in a single chip of semiconductor material. So other thing is basically it says its size is very small, size is reduced. So we told two problems with discrete circuits. One was that it has a lot of connections, so its reliability was questioned, and second thing was its size was very big. So two things is improved because of integrated circuits. Then third thing is lesser weight and space requirement due to miniature circuit. So this is same thing in other words. So if it is taking them less space, it is taking less weight. So like many times you think when we do space exploration, तो हम लोग सैटेलाइट्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट भेजते हैं कुछ डेटा के लिए, कुछ एनालिसिस के लिए. Like if we are sending something on outer atmosphere or we are sending something on Mars,
and moon. So there is a great constant of weight कि हम कोई भी जो सर्किट भेज रहे हैं, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट भेज रहे हैं, उसका वेट कितना होगा वो बहुत मायने रखता है. If we have a few grams and we want to do a lot of things with that. So for that, we need to have smaller circuits. Another thing is uh, if there are a lot of connection and this is big thing, so we can't take it. So many times we need a smaller weight and a compact our compact circuit. So that is the benefit with integrated circuits. It has a less weight and it requires less space and low power requirement. So you see, if there are not many different components and connection, similarly it will need less power. So very small power will be enough for operating circuit where we are using integrated circuit. We don't need heavy power for that. One thing, this thing is there. Then greater ability to operate at extreme value of temperature. And again, it says if we are using a circuit where integrated circuit means integrated circuit, then temperature is high temperature, that will be less problem. Means it can operate up to more high temperature or extreme condition where temperature is not very favorable, but it will be okay if it is integrated circuit because it is a compact one, it needs the power, and the internal circuit will not be so easily affected by temperature. Okay, it is made of silicon wafer. We will go into more detail. What is how we make it? Then this thing will be more clear. So, other than this, low cost because simultaneous production of hundreds of a light circuit and a smaller semiconductor, small semiconductor. Now it says its cost is low. Why? So first we try to understand if I told that all ICs has some particular name and number. So if you make a big circuit and very small, and then you make many of that. So making first one may take more time and more intelligence to work on to design and all. And once you are done, then you have to make copy of it. So if you need a lot of such circuits, so you replicate ICs. So you know, if you go in the market and buy some ICs, so many times you get it's cheaper, very cheaper, 50 rupees, 20 rupees, 100 rupees. That in that cost range you get simple ICs, which are very important for our it's home hold appliances and other a lot of things which we use very regularly, which has a high consumption. So we have integrated circuit very available in the market very cheap rate. Why? Because it is made in large number and then its cost is reduced. तो एक इसका एडवांटेज हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट का, इसका कॉस्ट भी कम हो गया क्योंकि हम लोग एक बड़े नंबर में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. And then other thing, the circuit layout is greatly simplified because integrated circuits are constant to use minimum number of external connection. External connection बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं तो सर्किट सिंपल हो जाता है. जो हम लोगों ने दो चीज बताया लगभग वही चीजें यहाँ पे है, लेकिन उसके अलग अलग तरीके से हम लोग देख रहे हैं. तो एक बोले रिलायबिलिटी बढ़ गया, फिर बोले कि साइज कम हो गया, वेट कम हो गया, पावर कम चाहिए और थोड़ा सा एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तभी भी चलेगा, कॉस्ट कम हो गया क्योंकि हम बहुत सारा बनाते हैं और लेआउट्स बहुत सिंपल हो गए. So these are 4-5 points. If there is a question which asks mention advantage and disadvantage of integrated circuit, so I hope you don't need to mug up. You just if you understand these points, this is like you will be able to derive
कि साइज कम होगा, रिलायबिलिटी बेटर होगा, उसके क्या रीजन है और क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे बनाएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा, छोटा सर्किट है तो उसको पावर कम चाहिए। These are very simple conclusions, so you don't have to mug up anything. You just need to understand why these advantages are there. If you understand, then you don't have to mug up anything. So these are the advantages. Now we need to see if there are some disadvantages. So this is the slide where I'm talking about what are different disadvantages possible because of integrated circuits. So one thing, if any component in integrated circuit goes out of order, the whole IC has to be replaced by you. So this is very small IC, and if something goes wrong with the IC, some connection inside, or some component, like we told that there are thousands of millions of transistors on a single chip. So if something goes out of order, so you can't repair it. This is one thing. So we have to change it by another indicator. बट इन ए डिस्क्रीट सर्किट, जैसे कोई एक रेजिस्टेंस है वो खराब हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल के फेंक देंगे, नया रेजिस्टेंस लगा देंगे। बट इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। वो अगर कुछ भी अंदर खराब हुआ तो वी हैव टू रिप्लेस इट बाय न्यू आईसी। तो दिस इज वन थिंग, दिस इज एन डिसएडवांटेज। ओके, देन नेक्स्ट, in an integrated circuit, it is neither convenient nor economical to fabricate capacitance exceeding 30 picofarad. Therefore, for high value of capacitance, discrete components extended to integrated circuit chips are common. तो और क्या बोल रहे हैं कि अगर हमको कोई ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें कैपेसिटर चाहिए थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी का, तो वो हम लोग इसमें फैब्रिकेट नहीं कर सकते। वो कन्वीनियंट भी नहीं है और इकोनॉमिक भी नहीं, इकोनॉमिकली ठीक नहीं है। तो अगर 30 पिकोफैरेड से ज्यादा कैपेसिटी का हमको कैपेसिटर चाहिए सर्किट में, तो हम लोग उसको इंडिकेटर सर्किट में फैब्रिकेट ना करके अलग से लगाते हैं। ये जो है एक डिसएडवांटेज ही कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। तो इसका रीजन क्या पता है कि ना तो ये कन्वीनियंट है ना ही इकोनॉमिकल है, क्योंकि हम लोग बोले कि लो पावर कंज्यूम करता है। एंड इफ यू मेक एन कैपेसिटर विद हाई कैपेसिटी, तो क्या करेगा, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। सो इफ स्टोर चार्ज, इफ स्टोर थोड़ा और ज्यादा कैपेसिटी होगा तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, एंड देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर आईसी, मे क्रिएट हीटिंग effects, and also that is why it is not convenient, neither convenient nor economical. So if you have a requirement of a capacitor which is capacity is greater than 30 picofarad, it is better to add it separately. You don't need to in the IC chip. You don't need to fabricate in IC because it is not. So this is another point which says disadvantage about disadvantage of integrated circuits. So third point, it is not possible to fabricate inductors and transformers on the surface of semiconductor chip. Therefore, these components are connected exterior to the semiconductor chip. So now it says, first we talked about capacitors. तो हमने बोला कि 30 पिकोफैरेड से बड़ा कैपेसिटर चाहिए तो आईसी में नहीं लगाएंगे, अलग से लगाएंगे। Now we are saying if we need a inductor, you know, we have learned electricity and magnetism course in second semester. We talked about inductance, mutual inductance, self-inductance, and also inductor, this is the L. So inductors, if we need inductors, we can't fabricate in an integrated circuit. If we need transformers, we can't integrate it in IC. So for this, we have to do it external. तो हम लोग कोई भी जो सिस्टम है उसमें हम उसको अलग से लगाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, कैपेसिटर 30 पिकोफैरेड से बड़ा नहीं लगा सकते और इंडक्टर ट्रांसफार्मर तो लगा ही नहीं सकते।
इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाई पावर आईसी। मतलब हम लोगों ने पहले बेनिफिट में बताया कि इसको थोड़ा पावर चाहिए होता है, लेकिन अभी ये भी है कि हम हाई पावर आईसी नहीं बना सकते, ये कन्वीनियंट नहीं है एंड इफेक्टिव भी नहीं। तो 10 वाट से ज्यादा पावर कंज्यूम करने वाला आईसी नहीं होता है। आईसी का पावर बहुत कम, बहुत लो पावर चाहिए होता है। एंड सो हाई पावर यूज जहाँ होगा वहाँ पे हम लोग को डिस्क्रीट सर्किट पे ही जाना पड़ेगा। okay? Then there is a lack of flexibility in IC. It is generally not possible to modify the parameters within which an integrated circuit will operate. तो जैसे एक आईसी हमने बना लिया, आईसी के कुछ पैरामीटर्स आता है कि कितना इसको हम कितना पावर चाहिए, कितने टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। There are a lot of things. If you find an IC, you will find a number, and if you search with that number on internet, you will find a lot of documents associated with that to tell what are these parameters. Within that, it will operate. So it said कि एक अगर आईसी हमने बना लिया, ठीक तरीके का है और कुछ काम कर रहा है, तो फिर हम उसके पैरामीटर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे डिस्क्रीट सर्किट है, तो हम कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, तो एक कैपेसिटर हटा के वो लगाया, एक रजिस्टर हटा के वो लगाया। वी कैन ट्राई समथिंग इफ वी आर वर्किंग विद इन सच सिस्टम, बट आईसी अगर हमने बना लिया, एक लगा दिया सर्किट में, तो हम इसको फिर चेंज भी नहीं कर सकते। उसका एक पैरामीटर है। So we discussed about advantages and disadvantages of integrated circuit. I think it is clear to all of you. You understand what are benefits and what are limitations. So now we are going to the next thing. First we define integrated circuit, then we talk about its advantages and limitations, and then how many types are integrated circuit, कितने तरह के integrated circuit होते हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे हम लोग 3 तरह से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक तो चिप साइज की तरह से कि चिप का साइज कितना बड़ा है, एक कि इसको बनाया कैसे गया है, क्या मेथड है बनाने का, और एक है इसका एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं। तो देयर आर 3 ways we can classify integrated circuits. So first we say on the basis of chip size. तो chip size मतलब जैसे ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो this is the chip. तो इसका साइज कितना बड़ा है, this will be one thing. और चिप का मतलब खाली साइज एक तो बाहर से देख रहे हैं, इस पे कितने ट्रांजिस्टर्स है, कितने रजिस्टर्स है, मतलब कितना बड़ा सर्किट इसमें इनबिल्ट है, that is also a thing of size we can see. So small scale integration, जैसे किसी में एक चिप है उसमें 100 ट्रांजिस्टर्स इनबिल्ट है, तो you will say this is small scale integration. Then medium scale integration, large scale integration, very large scale, ultra large scale, giga scale. So ये जो है क्या हुआ, ये जो नीचे हम लोग ऐसे आ रहे हैं स्मॉल से लेके गीगा तक, ये इवेंचुअली टाइम के साथ डेवलप हुआ। शुरू में पहले स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन लोगों ने किया, एक चिप पे कुछ 10-15 ट्रांजिस्टर्स एक चिप में हम लोग बना ले, और तो वो हो गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर लोगों ने देखा कि अच्छा है, और ज्यादा बढ़ाते रहे, जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होता जाएगा। सो इन द कोर्स ऑफ टाइम आल्सो इट चेंज लाइक दिस। So on the basis of chip size, when we say classification of integrated circuit, it also takes the course of time how things develop. कैसे चीजें आगे बढ़ती गई और कैसे हम लोग यहाँ से स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन से गीगा स्केल इंटीग्रेशन पहुंच गए। हम लोग इनको और डिटेल में बताएंगे स्केल ऑफ इंटीग्रेशन की। स्केल ऑफ का मतलब क्या है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, गीगा, व्हाट इज मीन एंड हाउ दिस नेम्स कम्स इन, ऐसा इसको क्या समझे हम लोग। तो इसको हम लोग समझेंगे कि स्केल का मतलब क्या है, और ये स्केल इंटीग्रेशन का साइज जो बता रहे हैं बढ़ते जा रहा है, वो कैसे बढ़ते जा रहा है। We will go into that detail. But as of now, you can say on the basis of chip size, integrated circuits are classified in different classes. So जैसे जैसे इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही वैसे चिप का साइज
मतलब चिप का जो एक छोटा सा चिप है उसमें कितना सारा सर्किट बना पा रहे हैं, उसका कैपेसिटी हमारा बढ़ते जा रहा है। तो दिस इज क्लासिफिकेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चर, कैसे बनाते हैं, जो हम लोग फैब्रिकेशन सीखेंगे, देन वी विल हैव अ बेटर आइडिया फॉर दिस। तो थिन एंड थिक फिल्म आईसी। ये फिल्म क्या है? थिन और थिक तो समझते हैं, पतला मोटा, लेकिन ये किस तरह का फिल्म का बात कर रहा है, कैसे बनाते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट। मोनोलिथिक आईसी, हाइब्रिड और मल्टी चिप आईसी। एक ही आईसी में कई सारे चिप है। मोनोलिथिक आईसी मतलब एक मेथड है कैसे करते हैं। वी विल गो इनटू दैट डिटेल, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट these terms mean। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, जिस तरह से हम लोग उसको यूज करते हैं, मोस्टली वी आर मोर इनटू एप्लीकेशन मोड। हम लोग तो जो डिवाइसेस है उनको हम यूज ही करते हैं। तो एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो कुछ होता है डिजिटल आईसी, कुछ होता है एनालॉग आईसी, कुछ होता है मिक्स सिग्नल आईसी। तो मिक्स्ड मतलब डिजिटल एनालॉग दोनों है। अब डिजिटल क्या है, एनालॉग क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा अगर यहाँ पे बात कर ले तो अच्छा रहेगा। आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि डिजिटल मतलब जिसमें दो स्टेज होता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कंप्यूटर का पूरा माइक्रो प्रोसेसर एक तरह का आईसी। माइक्रो प्रोसेसर हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो वो किस पे काम करता है? बाइनरी लॉजिक पे काम करता है, डिजिटल लॉजिक पे। डिजिटल लॉजिक में क्या होता है? दो नंबर है, जीरो वन। बाइनरी नंबर मीन्स जीरो वन। जीरो मीन्स लो, वन मीन्स हाई। So there are two stages, high and low, and on that basis it works. So it doesn't have an intermediate stage. एनालॉग मतलब जो हम लोग अभी तक जैसे कुछ सर्किट यूज करते हैं जिसमें हम एक कांस्टेंट सप्लाई दे रहे हैं इनपुट में पावर का, और वो उसको ले रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है। जैसे एम्पलीफायर का अगर हम लोग बात करें तो कुछ हम उसको लाउड स्पीकर है जैसे, उसमें हम लोग कुछ सिग्नल दे रहे हैं और सर्किट बनाया है, एंड आउटपुट में वी आर गेटिंग एम्पलीफाइड सिग्नल। तो दिस इज वी कैन से एन एनालॉग काइंड ऑफ, मतलब एक कंटीन्यूअस सप्लाई है, उसमें कोई डिस्क्रीटनेस नहीं। तो अभी ये हम लोग सेकेंड यूनिट में डिजिटल एनालॉग को और तो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? दे वर्क ऑन बेसिक डिजिटल सिस्टम। तो मैं अभी कुछ टाइम पहले बोल रहा था, दे वर्क ऑन बेसिक डिजिटल सिस्टम मींस टू डिफाइंड लेवल, जिसमें विच इज जीरोस एंड वंस। मतलब जो जीरो वन होता है बाइनरी में, जीरो होता है या वन होता है। तो ये बोले कि यहाँ पे दो डिफाइंड लेवल है उसमें, और या कहे कि हाई लो और ऑन एंड ऑफ। जैसे स्विच है वो है हमारा ऑन है ऑफ, उसमें दो ही स्टेज पॉसिबल, इसका स्टेज पॉसिबल नहीं। तो ये डिजिटल लॉजिक होता है। तो इस तरह का जिसमें इनपुट जाता है तो वो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, एंड दे वर्क ऑन दैट दैट लॉजिक। तो इसके एग्जांपल क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। These are examples of digital integrated circuits which contains millions of flip-flops and logic gates. अब flip-flops तो शायद तुम लोग को अभी नहीं पता होगा, we will go into that. Logic gate पता होगा, AND gate, NOT gate, NOR gate, इनको हम लोग logic gate बोलते हैं। इनके बारे में हम लोग, इनको भी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो ये सर्किट होता है डिजिटल आईसी, इसके अंदर बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप और लॉजिक गेट्स होते हैं। कैसे बनता है ये हम लोग सीखेंगे। एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होता है? दे वर्क बाय प्रोसेसिंग कंटीन्यूअस सिग्नल। इसमें जैसे दो स्टेज है, दो डिफाइंड लेवल है, जीरो वन और हाई लो और ऑन ऑफ। यहाँ पे क्या है, कोई ऐसा लेवल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल का प्रोसेसिंग करता है। जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, टाइमर, ये सब हम लोग सिलेबस में है, टाइमर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। सेंसर, these are examples of analog integrated circuits. They are used for amplification, filtering, modulation, demodulation. तो ये सब जो करते हैं उसमें जो चिप बनते हैं उनको हम लोग इंटीग्रेटेड एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे ओपम होता है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इसलिए कहते हैं कि इससे हम लोग जोड़ घटाना ये सब भी कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वी कैन डू विद ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
So integration, differentiation and all. So that is why it is called operational amplifier. तो अगर ये हम लोग को चाहिए, टाइमर चाहिए, सेंसर चाहिए, तो हम लोग एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाएंगे। एंड कुछ ऐसी भी सिचुएशन होता है जहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो फॉर दैट वी यूज मिक्स सिग्नल। So this is, I think it gives clarity over here. Now, if you look at this slide, so you have an idea, better idea for this. ये डिजिटल आईसी कौन सा होता है, उनका एग्जांपल भी बता सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, these are digital ICs. Analog ICs are timer, operation amplifier. These are analog ICs, and one is mixed one, तो दोनों का combination.